आज से 100 साल पहले लाहौर में जो बैठे थे उनका था कि कुछ नहीं होगा यार, ये इस तरह हवा में बातें होती हैं। और जब पार्टीशन ऑलमोस्ट ऑन द डोर थी, अगस्त 47 के पहले 15 दिनों की बात बता रहा हूँ, तब भी लोग ये सोच रहे थे अच्छा ये तो एक टेम्परेरी फेज है, हम कुछ दिन के लिए बॉर्डर के उधर जाएंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली 100 साल बाद भी आज भी कुछ नहीं चेंज हुआ है, विच टेल्स अस कि हम कितनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम में है। Even Jews have the first three values. However, they are not after converting all populations of the world to their faith. And that is the problem with Islam and Christianity, which is why they go out and destroy everything else that is out there. पहली जो मुझे प्राइस पे करनी पड़ी थी वो अपने घर में थी। ये 2011 की बात है, जब मोदी जैसा कोई व्यक्ति नेशनल पॉलिटिक्स के हॉराइजन पे भी नहीं था। एब्सोल्यूट डार्कनेस थी, हर रोज हजारों करोड़ के स्कैंडल निकलते थे, हिंदू टेरर अपने प्राइम पे था, मतलब वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम्स ऑफ रीसेंट टाइम। There is the Joshua Project, which is an aggregation of all church organizations. This is not an organization, by the way. It's just a facade, an aggregation, and called the Joshua Project to bring the light of Jesus to the entire world. ट्रंकेटेड भारत हमें मिला भी था 47 में। उसमें से भी आप ऊपर देख लो कश्मीर, नीचे केरल, ईस्ट साइड पे असम देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल देख सकते हैं, ऊपर नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, तो यू विल फाइंड आउट अ वेरी वेरी स्कैरी सिनेरियो अगर आप अपना कंडीशनिंग उसे छोड़ सकते हैं तो। एग्जैक्टली इज दिस कंडीशनिंग जो हमें हमारे आंख के सामने जो खतरा है वो देखने ही नहीं देती। Obviously, these two value systems are not equal, and yet the Constitution accords them equal status. This is a problem. This is what has been done to Africa. Even the large red marks, which are native religions, are only in small pockets. Namaskar, everyone. मेरा नाम राहुल देवान है, the founder of Hindu Fund, also Sangam Talks, if many of you may know about the platform. It's been running for 10 years. This is actually a fundraising webinar that we do every 2 weeks. The reason we do this is actually to gain momentum for the Hindu Fund, both small retail donations and large donations and so on and so forth. What do we do with those donations? Where does the money go? I'm going to share all of that with you. But before that, I'll give a little context of what the Hindu Fund is and why this is doing something like this is important. Let's first step back and understand what India is. And a lot of you, I'm speaking to the choir. A lot of you may not know this, but you may know this, of course. I don't have to set a context for you, but yet I just have to build the story. So for that reason, I will. India is not only a political entity or a geography. It is a practice of values, of a certain set of values that defines India and Indians. With that, Osho in some very beautiful words explains this, and he says, "Bharat koi bhukhand nahi hai, na koi rajnaitik इकाई, ना ऐतिहासिक तथ्यों का कोई टुकड़ा, ना धन न पद न प्रतिष्ठा की पागल दौड़। भारत एक अभीप्सा है, एक प्यास सत्य को पालने की." And it is these values of seeking that gives rise to many other value systems that give India its sacred, make it a sacred geography. And it is Hinduism and all religions, Indian religions emanating from it, which give it this sacredness. With that understanding, what are the challenges that the majority feels, and why does the majority feel that we are constantly under attack? We'll start with the Constitution, which accords equal status to all religions, irrespective of their practices, values, and more importantly, the outcomes that they deliver in society. The values that I was talking about, Indic values, no matter what religion, see divinity in all creation broadly. There is no othering at the spiritual level. We may be doing othering of uncha, nicha, jati, varna, whatever it is, at the bhautik level, at the gross level. But there is no othering at the spiritual level. We are a knowledge-seeking civilization. We broadly have a respect for all forms of faiths, which actually gives us our uniqueness, our how they call American exceptionalism. There is Indian exceptionalism in this.
But if there is not respect, at least there is, the minimum is respectful disagreement, which is what debates and discussions, Shastras was all about. What is the Abrahamic value system? That my religion is the only true one, splits the worlds into believers and infidels. There is finality of scriptures. So far, even Jews have the first three values. However, they are not after converting all populations of the world to their faith. And that is the problem with Islam and Christianity, which is why they go out and destroy everything else that is out there. Obviously, these two value systems are not equal, and yet the constitution accords them equal status. This is a problem. This is what has been done to Africa. Even the large red marks, which are native religions, are only in small pockets. Broadly, all of Africa has been divided into Islam and Christianity, and all of South America is Christianity, all of North America is Christianity. This is what these two religions have done to the entire world, and that's what they want to do in India. So strong is this need for converting people based on their scripture that they could not deal with Gandhi, who they eulogize so much and think of him as a great man, that they had to baptize him posthumously. In the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints had to baptize him posthumously in 1996, because so that they could deal with the fact that, oh, he died a Hindu, an infidel, and so that he does not burn in hell and so on and so forth. People say, oh, why are you you're kitna Hindu Musalman karte ho? So I thought that even Rabindranath Tagore did Hindu Musalman. So let me quote him. There are only two religions on earth which have a distinct enmity against all other religions. And by the way, the reason I'm sharing some of these is also so that some of this becomes material for you to, talk in small groups and share it further. And that also furthers our objective, right? It's not only funds, it's narratives. I quote again, these two are Christianity and Islam. They are not just satisfied with observing their own religions, but are determined to destroy all other religions. And he goes on to say, take a very negative position. The only way to make peace with them is to embrace their religions, which is exactly what they want. And because we are resisting all this, so we are called Hindutva and whatever, saffron terror and so on and so forth. This is a question, this is my red pill question. Whenever I hit upon a secular or a group of students in a college, I ask them to raise their hand and say if 80% of Indians became Muslims, would India remain? And there is stunned silence every single time in the room. So use this, when you face a secular Hindu or a group of Gen Z youngsters who say Hindu Musalman mat karo or jo bhi, whatever other things they say. Use this question. It's a very powerful question, I thought. I had even asked Justice Keher, retired Justice Keher, the Chief Justice of India, the same question and cornered him with this, including Anil Shastri, Lal Bahadur Shastri's grandson, who was actually trying to give me a lesson in secularism 2017. This is a charge sheet document of the Popular Front of India. This is a public paper that they had within themselves, public in the sense that they were circulating it among Muslim groups and whatever, their own BFI groups or whatever, that by 2047 they want to Islamize India. And the document states clearly how the army, police, judiciary has to be infiltrated to establish an Islamic rule. This is March 18, 2023. 12 of them were charge sheeted. PFI was banned. And of course, now they have morphed into SDPI and are fighting elections in Hyderabad to Bihar to other places, Kerala, other places in India. I want to make you hear this video of this Maulvi. I really like him because he tells the truth. We have to make our education system independent of this secularism, Islamization of knowledge. So we want to Islamize all sciences, whether it's biology or physics or medical science, and then you go to community and then society and to country. And that's how the entire nation is reformed. First move that I will do, I will abolish the constitution and I will establish the only logical and rational constitution, which is the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That will be my first move.
I wish we could somehow urge the Indian Lok Sabha and all the Vidhan Sabhas to show this in the parliaments and the Vidhan Sabhas. Hopefully, they would wake up and understand that what PFI wants is exactly what this man wants and exactly what Islam wants. Just that most people lie. People like him tell the truth. He's from not far from Delhi. If I'm not wrong, he's from Deoband. And of course, now after going to Chicago, he's added Al Wajidi to Arabize himself. And this lecture, I believe, is in Chicago. There is the Joshua Project, which is an aggregation of all church organizations. This is not an organization, by the way. It's just a facade, an aggregation, and called the Joshua Project to bring the light of Jesus to the entire world. And so you see, India is one of the most unreached populations globally, and they've mapped every small 5,000 people group in India. 1,400 languages they have Bible in, spoken dialects, and so on and so forth. And surprisingly, in our research, we found that World Vision, which collects money in the name of children, is one of the coordinators for the Joshua Project. So, along with Vishnu Shankar Jain, or under Vishnu Shankar Jain's leadership, we're doing some research and actually trying to take them on. Let's see where all of that goes. I saw this tweet a few days ago that the highest number of Sikh conversions to Christianity are happening right under the nose of Amritsar, Harmandir Sahib. And so, I had asked Grok earlier that how much of Punjab is converted to Christianity. 10 to 15%, it says, with about 23% in Gurdaspur and in Amritsar. Turban wearing, hallelujah saying Sikhs or Christians, whatever you want to call them, is not an uncommon sight in Punjab anymore. And then there are father and reverend priests like George Punaya, who actually said in Tamil at a large gathering that we wear shoes so that Bharat Mata should not contaminate us. And this is the same man who had lectured Rahul Gandhi on how Jesus is the real God. And a very interesting conversation, you should find it. He's asking that, is Jesus God? Is he God? Then he says son of God or something. This happens during the Bharat Jodo Yatra. And he gets away with it. Both Rahul Gandhi and George Punaya. Of course, our temples are not under our control. Of course, this has been an ongoing battle, and even under the government, nothing has been done about this. Ishwar only knows what the reason is for not removing temples from government control. There are other things like Islamophobia. If you say anything, if this talk is made public, I would be called an Islamophobe, and UN would lecture me, and the special envoy to combat Islamophobia would perhaps come and lecture me on how I'm an Islamophobe. And so, of course, there's no mention of Hindu phobia. Not that we wanted it, but we are only reacting to sanctifying Islamophobia. And on the other hand, we are fighting battles like swastika. So there are battles all over, mostly in India, but also internationally, and we are constantly put upon one battle over the other. This is my colleague, Sufia Pathan, and she does research on communalism and caste, and she's a co-author of a book with all her co-disciples of Balagangadhara called The Western Foundations of Modern Caste. So Sufia says that in trying to protect the marginalized, the idea in 1947 was that the law must shackle some. But actually, in her observation, we are not shackling some, we are actually handing out weapons to each one of these sections of society to use against each other. And that is also a battle that has been thrust upon us. All the, Ambedkarite movement and so on and so forth is what she's referring to here. So, my view, and I had a chance to discuss this yesterday with Guru as well, that we are heading towards a civil war, and perhaps other calls for partition. And so, what are people working on, to prevent this, or perhaps if there is a civil war, then to claim a state that is truly Indian and Dharmic? What do we need to do?
At this point, the government actually is talking about Viksit Bharat and probably nothing else. My questions have been that will stone pelting on Ram Navami Shobha Yatras stop in 2047? Will Christianity stop soul harvesting? Will we have a fair and free justice system? Will I be able to criticize Muhammad just as everybody criticizes Ram and Ramcharitmanas and Manusmriti and everything else? So will I have the same freedoms? Will the state defend my freedom of speech tooth and nail at whatever cost? So if these questions are not answered, just a Viksit Bharat is not good enough for me. It is a fantastic indicator. We must be rich. There's no doubt about it. I'm actually a fan of Modi ji, whatever said and done in these terms. But without these questions answered, that is not a Bharat in 2047 that I want. So I'm here to fight a battle. I'm here to fight a war. And I want a Dharma Rajya by 2047, a state that protects, preserves, promotes its homegrown knowledge systems, traditions, cultures, and values. People call this Hindu Rashtra, Hindu Rajya, Dharma Rajya, Ram Rajya. We calling it Dharma Rajya. There are different names we call this ideal by, this utopian idea of who we want to be, who we were, and so on and so forth. So what are solutions that some of us are fighting? Mohit Bhardwaj is building a Gurukul. He's reviving a Rig Veda Shakyayan Shakha, which was prescribed for North India. That's him with his brahmacharis. This is in Sonipat. There are battles of recognizing Gurukuls at the same level as madrasas and missionary schools being fought. Sardar Ravi Ranjan Singh ji has been, my mentor or whatever you may want to call on understanding the halal mafia. And, he's been pioneering and leading the Jhatka movement. We hosted the Swarajya, we, organized the Swarajya conclave earlier this year. Earlier in August, 21st August, we organized, and actually we asked the 5-star hotel to give us only Jhatka chicken and Jhatka mutton. And we had put up a board, and Ravi Ranjan ji was there, and we both took a picture over there. So just to prove a point. Vishnu Shankar Jain stopped wuzu. For 500 years, Muslims had been washing their feet around this shivling and calling it a fountain. Probably the fountain came later, but they must have known this is a shivling. And so he stopped this, and he's in the basement. He's got the puja started. So single man, of course, many people and organizations, Hindu organizations, are telling him not to find a shivling under every mosque. There are people in Scotland, Hindus in Scotland, who've been fighting to get Hindu phobia recognized in Scottish Parliament, and there are some Scottish parliamentarians who, back this, and this is law in Scotland. Of course, it should become law in other countries as well. There are brave people like ex-Muslim Sahil. Of course, Neeraj ji is here. I don't have a picture of him, a short story on him here in this presentation. I've done that in other presentations. People who've at great risk talked about Islam, called out the values of Islam, and encouraging, challenging Muslims, challenging their value systems, challenging their humanism, as Sitaram Goelji used to say, and the hope that they at least leave Islam, and if not, come back home to Hindu Dharma. There are people like Vimal, who runs Ugra Narsimha Trust, finds temples in this state in Kerala, in Malappuram, which is where Tipu Sultan, Hyder Ali, and later the Mopla riots, that's how they left the temples. The murtis were thrown in village, in temple wells. So he recovers all of them and then turns them into temples like these, and hands it over to the community, Hindu community, sometimes manages them himself. He's on his 16th project. And there are 160 projects that he's documented, temples like this. This is brilliant work by Nupur Sharma and Rahul Roshan on building the Hindu phobia tracker. We people rant too much. We crib and cry way too much on social media. In fact, but we do very little institution building. So here is a great example of building an institution which actually tracks
cases of Hinduphobia, and with journalistic standards of the highest standards, right? The global standards of journalism. This is the kind of work we need to back our people with our money. There was this gentleman in the US who said, "Oh, he's also documenting Hindu phobia." How was the documentation being done? By tweets. So, Nupur has done an absolutely brilliant job here, and they've documented over 4,500 cases since January 2024. Of course, this was possible. So I'll move forward. T.R. Ramesh has been fighting Tamil Nadu HRNC to free temples in Tamil Nadu for what, 20 years? I think 2011 onwards or something. And surprisingly, I have now talked to people in India, some rich business houses. Then I've talked to people visiting from US, multiple people. There are groups called Freeing Temples with TR Ramesh Freeing Temples and so on and so forth. And whenever I've asked that, okay, how is he, we need to fund him. Oh, he's very well funded is the first answer. Then I say, who funds him? Oh, I know many people. Can you give me some names, please? And how much money they send? And then everything, goes awry because nobody bloody funds him. Okay. But everybody talks in his name, patting his back on WhatsApp groups, brilliant work. I organized one gentleman in Chennai to actually send him some money. That also is erratic. I used to fund him back in 1819 for 2 years. I funded all his work. We need to be able to write checks for people like that. I met somebody recently, he mentioned that, oh, he's passed the test. We can't be judges of people like Rameshji to having passed a test. This guy has given 20 years of his life. What have we done? Earned money which we are not giving? I can't even understand statements like that, to be honest. Anyways, so that's T.R. Ramesh. This is Pavitra Srinivasan. She's, because of a guru wanting to do Gita 18 chapters in Bharatnatyam. She's managed to because of funding from us. After that, it's a very expensive exercise. So, we are trying to see if we can find some art patrons and so on and so forth who can support our work, because it just becomes impossible for us to support everything. This is Parvati ji. She's in Bengal Files. Her singing is featured. Sorry about the poor quality of the pictures. Parvati ji is building an ashram in Bengal near Shanti Niketan because of the ask of a guru. That's him who said that Baul is dying, but is a dying art. They're all Vaishnavas largely. And only in Bengal, they roam around like nomads, don't settle. But he asked Parvati ji to make an ashram and settle and teach Baul so that the art survives and thrives. So it's people like that, and this is why we are here and why we are doing this fundraising webinar. That I'm after raising 1,000 crore Hindu fund, an endowment fund. So 1,000 crores in endowment, which means that when we have that, it's basically money that we invest in markets and so on and so forth and earn off the growth of the money. So my principle in the last 8-10 years of running third-party donations, which I've now attributed to the Hindu Fund, has been to make liberal grants and don't ask too many questions to wonderful people who've given a lot of their life to this, and trust them by default and see what they do over a long period of time. Give 10,000 rupees for 10,000 questions is unacceptable and should be unacceptable to all of you. They have to face people that I just sort of talked about. For instance, just a small example. Parvati ji had to make 3-4 trips every year to US and Europe and other places just to simply pay salaries of the ashram. I had to ask her one day that you are not going to do this anymore. And you travel 10 times a year, I don't care, for promotion of Baul, but just to pay salaries and things like that and just keep things running, you will not have to do that anymore. So I think, those kind of things have to stop. These people also face a lot of indignity when asking for money. I have faced this myself in trying to raise money for others and for projects that I was involved in. For example, Hindu Charter way back in 2018, 19, something like that.
So what am I after? At this point, I'm trying to raise an endowment fund of 25 crores for legal work. There is a lot of detail that I have. Probably I'll go there. There's a lot of freeing temple cases, including one that I'm personally fighting from my trust, Salute Trust. If we are able to move forward with that, it changes a lot of things. It does not only free temples, but it sets a precedent for Sabrimala temple issue, ambiguous definition of minority, and so on and so forth. And this has been thrown by Chandrachud ji from the Supreme Court to the Madras High Court. But we had a very good statement by the CJI in Madras High Court, who actually asked the Tamil Nadu government to give a notice of why he should not terminate the HRNC in 4 weeks. So there are battles like that. There is the Foreign Contributions Act, an old Hindu Charter demand. I don't know if any of you are familiar with the Project Hindu Charter. It was started by the ex-CBI director who I was working with. And so this, now the state is that the government of India has actually stopped publishing FCRA donations itself. So once again, with Vishnu Shankar Jain, we are taking some of these. We now have a list of 14-15 cases that Vishnu Bhai is taking up, and he should not have to do all this for free. He and his father for 40 years have fought cases, over 180 cases at last count. And all of this is for free. I asked Vishnu once that, how do you fund all this? So he says, सब खुद करते हैं. और शायद किसी ने ये प्रश्न भी नहीं पूछा था. Nobody even asked him that question कि how do you fund all this? So that's our state largely. While Kapil Sibal is able to, get 25 lakhs or whatever for every hearing and open Supreme Court doors at 2 a.m. He's able to do that because they fund him with crores, right? And we cry that Supreme Court does this. Well, we should also fund our side of lawyers with crores. They will also then get our things done. There should be competition between lawyer, businesses, right? Saying that, अरे हमारे को भी कुछ temple का case लेना है. ऐसा भी होना चाहिए. ये competition should also happen. ODG has just launched the Gyan Bharatam mission. And honestly, how the government setup is, there's not much that is going to happen. So with a few other friends and co-dharmikas, actually most scholars, I'm the only non-scholarly person there. We are forming manuscripts and digitization, manuscripts and inscriptions digitization foundation, and this is set up in Dharwad in Karnataka. And there's a big roadmap for inscriptions and manuscripts. In fact, at the Swarajya Conclave, we showcased some of this. We're in touch with the culture minister. We are constantly making petitions and whatever to the ministry, making recommendations on what needs to happen, other than build our own team. So we have an epigraphist now who's leading the inscriptions digitization effort. Believe it or not, in 1896, the British had published the Epigraphia Indica. To date, including on IGNCA, archive.org, and VJP's own website, it is still available as scanned copies of that. We don't have truly available digitized Unicode versions of Epigraphia Indica or Epigraphia Karnataka. There is a gentleman we came across in Rajasthan who's now at his 1000th Devli inscription. And all of them are on WhatsApp and maintaining Google Sheets, to transcribe and maintain and translations to maintain what the inscription says. There is no platform that India has, software power. And of course, want to raise a corpus, an endowment fund for spiritual infrastructure, gurukuls, ashrams such as the Baul ashram that I told you about. And we have about 2.5 crores annual recurring to about 50 plus organizations monthly and annually and so on and so forth. Kuch na kuch chalte rehta hai. So this is operational money, and then this is corpus that I'm trying to raise so that we can earn out of the growth of the money and go. And this is only a start. We have to get to, for the legal fund, I think we should get to a 200-250 crore corpus if we really want to do this really well. I already talked about the state of inscriptions. And just to share with you, since 2016 until about 31st March 20, maybe this is 30th August now,
we've given donations of about 18.5 crores. And of course, like I said, we have about 2.5 crores annual recurring. There's a governing council, so it's there's a good number of reputed people. Anand Prasad, one of the top legal companies in India, the Mohandas Pai family, Vijaya is the co-founder and the Uttaradhikari of Infinity Foundation. Swamiji, General Bhatia, Sudarshan is with me in MIDF, the Manuscripts and Inscription Digitization, and also here. He's a scholar of history of ancient Indian science and so on and so forth. So good people that I'm collecting the money in name of, other than myself. And I'll stop here and hand over to Neeraj ji. And we'll leave you with this thought that dharma ka mool artha hai. Without artha, no dharma can be protected, never has been protected. We'll hand over to Neeraj ji. थैंक यू राहुल जी, और सभी को नमस्ते। कुछ मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे जब ये बोल रहे थे कि विष्णु शंकर जैन से ये काम करवा रहे हैं, और विष्णु जी का एक ट्वीट मैंने देखा, ही सेड के जब भी कोई क्रिटिकल केस होता है कोर्ट में, तो हमारी तरफ से 1 2 एट द मोस्ट 3 पिटिशंस होती हैं, सामने वालों की 1000 होती है। तो ये जस्ट एडिंग टू व्हाट राहुल जी हैज बीन सेइंग कि हमने अभी तक वी हैव नॉट गॉट आवर एक्ट टुगेदर। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि वी हैव नॉट गॉट आवर एक्ट टुगेदर, तो उसका मतलब क्या है कि मैं अगर आपको अपना ही एग्जांपल बता दूं, तो आई वाज अ टिपिकल अर्बन मिडिल क्लास सेक्युलरिस्ट कम्युनिस्ट टाइप ऑफ पर्सन, जिसे कुछ लेना देना नहीं था कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या है, दीन क्या होता है। बस मुझे था कि मुझे पैसा कमाना है, बड़ा घर लेना है, एसयूवी लेनी है, यूरोप या अमेरिका वेकेशन पे जाना है। तो जो एक स्टैंडर्ड एक टेम्पलेट हमारे लिए बनी है, हम उसी में फंसे हुए थे। और देन कुछ चीजें हुई जिसके कारण वो सब चेंज हुआ, लेकिन वो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट मीटिंग मैंने अटेंड की थी वो थी 2011 में, जिससे ये चेंज आना स्टार्ट हुआ। चंडीगढ़ में एक आईजी होते थे राम ओहरी नाम से, तो जब मैं 2011 में उनसे मिला, बाय दैट टाइम ही हैड शिफ्टेड फ्रॉम चंडीगढ़, दिल्ली आए। ही वाज डायरेक्टर ऑफ आई थिंक इंटेलिजेंस, और फिर वहां से रिटायर हो गए थे, वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर। तो राहुल जी ने अभी हमारे साथ शेयर किया कि जो पीएफआई का डॉक्यूमेंट 2047 मिला था अभी 2 साल पहले, वो राम ओहरी जी ने हमें 2011 में बताया था कि जो मुस्लिम्स हैं दे आर प्लानिंग टू टेक ओवर दिस कंट्री बिफोर 100 years ऑफ पार्टीशन। तो सेम उन्होंने हमें आज से 15 साल पहले बता दिया था कि दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। और मैंने उन्हें ट्रस्ट नहीं किया। मैं जब घर आया तो वी वर ऑल थिंकिंग कि जो ओहरी जी हैं, मतलब जो शब्द थे वो क्या थे कि बूढ़ा पागल हो गया, ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग, समझ में आया कि कितना बड़ा थ्रेट है। मुझे आप सबकी बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन आई एज्यूम कि एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा उसी टेम्पलेट में जीता है जिसमें मैं जी रहा था। और वो क्या करता है, हमें एक अपने कोकून में या बबल में रख देता है कि हम उससे बाहर सोचते ही नहीं है, ना सोचना चाहते हैं। और एक कभी कभी फिर मैं क्वेश्चन पूछा करता हूँ जब कहीं मीटिंग होती है, आज से 100 साल पहले जो लाहौर में हुआ था, क्या वो आज के लखनऊ में हो सकता है या बेंगलोर में हो सकता है। तो जो लोग क्वेश्चन सुनते हैं उनका जो रिएक्शन होता है ना, वो जनरली स्केप्टिकल होता है। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ दोज पीपल जो देख रहे हैं कि मैं 15 साल से जो काम कर रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड होता है, आई हैव अ वेरी हाई क्रेडिबिलिटी, लेकिन स्टिल वो जो इतने वर्षों की कंडीशनिंग है दैट्स इमीडिएटली किक्स इन कि ये तो हो ही नहीं सकता। देन आई ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन देम कि एग्जैक्टली यही माइंडसेट आज से 100 साल पहले लाहौर में जो बैठे थे उनका था, कि कुछ नहीं होगा यार, ये इस तरह हवा में बातें होती हैं। और जब पार्टीशन ऑलमोस्ट ऑन द डोर थी, अगस्त 47 के पहले 15 दिनों की बात बता रहा हूँ, तब भी लोग ये सोच रहे थे अच्छा ये तो एक टेम्परेरी फेज है, हम कुछ दिन के लिए बॉर्डर के उधर जाएंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली 100 साल बाद भी आज भी कुछ नहीं चेंज हुआ है, विच टेल्स अस कि हम कितनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम में है। और अभी जब बंगाल फाइल्स में देख रहा था तो सेम थिंग वाज हिटिंग मी
कि आज जो बंगाल में हो रहा है वो नोआखली में 100 साल पहले हो गया था या 80 साल पहले हो गया था, हम वहीं आज भी फंसे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? हम कई बारी रिटोरिकली या गर्व से बहुत बात करते हैं कि हम तो चाणक्य के वंशज हैं जिन्होंने ये किया वो किया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब चाणक्य ने एक बहुत सुंदर बात बोली थी जो उन्हें एट्रीब्यूट तो एटलीस्ट की जाती है कि द बेस्ट वॉर वन इज अ वॉर वन विदाउट फाइटिंग। पिछले 100 साल से हम जिस वॉर में हैं, हमारा एनिमी हैज बीन विनिंग दैट वॉर विदाउट फाइटिंग। उन्होंने हमारे माइंड स्पेस को ही इतना ऑक्यूपाई कर लिया, इतना मिस डायरेक्ट कर दिया कि वी इवन डिड नॉट नो के हम धीरे धीरे दे आर निबलिंग अवे एट अस। कि जो ट्रंकेटेड भारत हमें मिला भी था 47 में, उसमें से भी आप ऊपर देख लो कश्मीर, नीचे केरल, ईस्ट साइड पे असम देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल देख सकते हैं, ऊपर नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए। तो यू विल फाइंड आउट अ वेरी वेरी स्कैरी सिनेरियो अगर आप अपना वो जो कंडीशनिंग है उसे छोड़ सकते हैं तो। लेकिन द पॉइंट एग्जैक्टली इज दिस कंडीशनिंग जो हमें हमारे आंख के सामने जो खतरा है वो देखने ही नहीं देती। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? ये क्वेश्चन जो मेरे माइंड में 2011 में अराइज हुआ था, तब आई पिन पॉइंटेड आउट कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एजुकेशन सिस्टम है। और तब मैंने वो एनसीईआरटी के अगेंस्ट लड़ाई शुरू की, हालांकि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं कमाई भी कर रहा हूँ और ये भी काम साथ साथ कर रहा हूँ तो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम काइंड ऑफ अ यूनिडायरेक्शनल इंडिविजुअल, मैं मल्टीटास्किंग बहुत कम कर पाता हूँ। तो बाय दैट टाइम मेरे पास सेविंग्स थी, ठीक थी, नॉट वेरी लेविश, लेकिन आई थॉट कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ कि जो पहला इंस्टांस मैंने आपसे शेयर करता हूँ आज, 2011 में मैंने इंक्विजिशन के बारे में पढ़ा, जो कभी किसी को 99.999% हिंदुओं को पता ही नहीं है कि इंक्विजिशन नाम की कोई चीज भी थी। दैट वाज सो अगली, सो ब्रूटल, कि मुझे लगा यार ये तो इतना क्लियर केस है कि वंस आई ब्रिंग दीज फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ जनरल पॉपुलेशन, हिंदुओं के सामने ले आऊंगा, तो उन्हें इमिजिएटली समझ आ जाएगा कि धर्म और रिलीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने दो कारपेंटर अपने घर में बिठाए, जो वो सारी मशीन्स जिन्होंने बनानी शुरू की, जिनके साथ हमारे देश में ही और संसार भर में टॉर्चर करते थे। और जो मेटल वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मैं इंडस्ट्रियल एरिया में जाता था, वहां पर बना के फैब्रिकेट करवाने शुरू किए। आई थॉट कि आई हैव अ वेरी ग्रैंड एग्जीबिशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और वंस दिस हैपन्स तो क्रिश्चियनिटी गिराना तो यूं फटाफट से हो जाएगा कि 4-5 साल में आई ब्रिंग इट डाउन। तो उसका जो पहली जो मुझे प्राइस पे करनी पड़ी थी वो अपने घर में थी। ये 2011 की बात है, जब मोदी जैसा कोई व्यक्ति नेशनल पॉलिटिक्स के हॉराइजन पे भी नहीं था। एब्सोल्यूट डार्कनेस थी, हर रोज हजारों करोड़ के स्कैंडल निकलते थे, हिंदू टेरर अपने प्राइम पे था, वो जो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल था वो पार्लियामेंट के वेबसाइट पे था। मतलब वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम्स ऑफ रीसेंट टाइम। तो सब डरते थे। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछना शुरू किया कि ये जो तू बनवा रहा है ये क्या है। तो जब मैंने उन्हें बताया, दे हैड दैट वरीड लुक ऑन देयर फेस। तो प्रोबेबली उस दिन उन्होंने डिस्कस किया, अगले दिन आए बोले कि दिस कैन नॉट गो ऑन, कि तू आप तो अरेस्ट होगा ही और हमें भी अरेस्ट करवाएगा। सो आई कुड अंडरस्टैंड उनका जो कंसर्न था। तो आई सेड कि आप मुझे डिसोन कर दीजिए अगर पुलिस वाले आएंगे, जैसे कि हमारी बात नहीं सुनता है। तो वहां से स्टार्ट हुआ। और फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे, जब उनसे मैं बात करता था कि हमें करना चाहिए, एवरीबडी स्टार्टेड बैकिंग आउट। तो मुझे लगा मैं ऑलमोस्ट अकेला ही हूँ। एनीवे, तो उस एग्जीबिशन को जब लगाने की कोशिश करते थे, वेन्यू ढूंढते थे, तो सब जगह रिजेक्शन मिलती थी। कहीं एंट्री मिली तो कर पाए, नहीं तो मतलब दिस स्ट्रगल वेंट ऑन। और साथ में एनसीईआरटी वाला चल रहा था, और तब मुझे ये हिट किया कि जो नैरेटिव की पावर है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन वो जो एक
रशियन स्पाई की एक वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, बड़ी कॉमन है वो, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका। वो बता रहा है कि स्टेजेस ऑफ परवर्शन कैसे होती है। तो आई कुड आइडेंटिफाई कि हम स्टेज ऑफ कंप्लीट डीमोरलाइजेशन में आ चुकी हैं, कि जब आप बिल्कुल रॉ फैक्ट्स लोगों के सामने रख देते हैं तब भी आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो एनीवे आई स्टार्टेड विद दैट। और उस समय यूट्यूब से मैं कन्वर्सेंट नहीं था, तो मैं ब्लॉग लिखता था जिसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखता था। तो दोज हु रेड, वो बोलते थे "ये तुझे तो मार देंगे, तेरा गला काट देंगे, यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ"। एनीवे, सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज, मेरा सोशल कैपिटल वाज इरेज्ड, फैमिली कैपिटल वाज गॉन, और जो फंड्स थे वो डिप्लीट हो रहे थे बिकॉज नाउ आई वाज स्पेंडिंग मनी। हम तब लगता था छोटी छोटी चीजें हैं, 2-3 लाख से क्या फर्क पड़ेगा, 2 लाख से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इट स्टार्टेड गोइंग डाउन। और फिर आपका जो फैमिली में कैपिटल होता है, जब आप अर्न करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो लोगों की आपको देखने की जो नजर है वो बदल जाती है। आपके क्लोज रिलेटिव्स, मैं क्लोजेस्ट रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, नजर बदल जाती है उनकी। तो वो सब झेलते 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 ही काम कर रहा था। तो राहुल जी से मेरी मीटिंग पहली बार जब 2018 या 19 में मिला था, 18 था शायद, दिल्ली में वो एक आई हार का एक सेमिनार था, वहां मिले थे। तो आई मेट दिस वेरी अनएज्यूमिंग टॉल गाय, क्या मेरे पास के क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि ऐसे चल रहा है। तो ही वॉज वेरी कंसर्न्ड, कहते कि यू शुड स्टार्ट योर। अच्छा, बाय दैट टाइम वो थोड़े थोड़े से थ्रेट आने शुरू हो गए थे भाईजान लोग के। तो मेरा जो पब्लिक में निकलना था थोड़ा थोड़ा, अभी इनिशियल फेजेस से मुश्किल हो रहा था। तो राहुल जी वॉज वेरी एडमेंट कि ऐसे तो कैसे चलेगा, यू हैव टू अर्न, क्योंकि ऑब्वियसली सस्टेन करना है घर में, किचन चलनी चाहिए। तो कहते कि अगर आप उसे रीस्टेब्लिश करिए अपना कोचिंग सेंटर, और इफ यू नीड सम फंड्स आई विल गिव गिव देम टू यू। तो मैं अंदर अंदर सोच रहा था, ये इसी संसार में ऐसे लोग होते हैं क्या। तो ही सेड यू शुड गो इन फॉर दिस, तो आई सेड नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो जो 2014 से पहला वाला टाइम था ना, वो कभी कभी थोड़ा रोमांटिक भी लगता है, कि मैं वो राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ता था, कि सर कटाने की वो जो उनका एक बड़ा फेमस सा है, अ, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो यूज टू थिंक कि कोई बात नहीं, मरना है तो मर जाऊंगा, लेकिन ये ऐसे घुट के नहीं काम करूंगा, धर्म का काम तो करना है, कि जो पूर्वज थे वो करते रहे, तो आई ऑल्सो हैव टू डू इट। तो राहुल जी को मैंने बोल दिया कि नहीं, वो अब मैं फिजिक्स छोड़ चुका हूँ, फिजिक्स में नहीं जाऊंगा ना, आई एम गोइंग ओनली इनटू इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिस्ट्री, यही मेरा काम है। सो देन ही सेड कि ओके, व्हाट विल डू इज, हम एक रिसर्च करें, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जो एट्रॉसिटीज है उन्हें डॉक्यूमेंट करेंगे। बाय दैट टाइम मेरी बुक आ चुकी थी, ब्रेन वॉश रिपब्लिक, ये सब कर चुका था, और आई हैड अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन दिस। तो व्हेन ही गेव मी दिस ऑफर, तो दिस वाज समथिंग वेरी कन्वीनियंट टू मी, कि जो मैंने इन एनी केस करना ही है, तो उसके लिए अगर मुझे फंड मिल जाते हैं और मेरी किचन सिक्योर हो जाती है, तो कम से कम वो जो घर में मुझे ऐसी आंखों से देखा जाता है कि अब ये बोझ बन सकता है, तो वो तो नहीं होगा। तो आई एक्सेप्टेड दिस। और साथ ही साथ जो दूसरा काम था, आई थॉट कि मैं तो बैक पे काम करूंगा और ये रिसर्च करता रहूंगा, और जो ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को हमने एक्सपोज करना है, दैट इज नॉट वेरी इजी। और उसके लिए मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, कि आई विल एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल ऑफ यूट्यूब। मैं बड़े स्मार्ट से लड़के और लड़कियां, वेरी गुड लुकिंग फोक्स, उन्हें स्क्रिप्ट तैयार करके दूंगा, वीडियोस बनाएंगे। अच्छा, और मेरा अल्टीमेट ड्रीम था कि मुझे जाकिर नाइक के जैसा एक अपना चैनल चाहिए जिस पे मैं उसे काउंटर करूंगा। तो मुझे पता चला हजारों करोड़ लगते हैं, तो फिर मैंने तब छोड़ दिया था। तो फिर सस्ता चैनल यूट्यूब पे बन सकता है। तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट तैयार की, तो आई अप्रोच्ड जो लोग, क्योंकि मैं यंगस्टर्स के तो टच में रहता ही था, कुछ लोग एस्पायरिंग मॉडल होते थे, वेरी गुड लुकिंग बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने उन्हें अप्रोच किया कि हम ऐसे बनाएंगे एंड आई विल पे यू। तो तब तक मेरे फंड्स, अपने वाले जो सेविंग्स थी, वो डिप्लीट तो हो गई थी, लेकिन स्टिल मुझे था कुछ ना कुछ तो कर लूंगा।
इनिशियली वो एक्साइटेड होते थे, लेकिन जैसे ही वो स्क्रिप्ट देखते थे तो मना कर देते थे कि हम अपनी जान रिस्क पे नहीं डाल सकते। तो सेकंड ऑप्शन वाज कि कुछ सामने पिक्चर्स आ जाएं, कुछ एनिमेशन आ जाए और पीछे से वॉइस ओवर चला जाए। तो अगेन आई थॉट कि मार्केटिंग वाले दिमाग से सोचा कि किसी का ऑथोरिटेटिव अच्छी सी वॉइस हो जिसका वॉइस ओवर चलेगा। तो आई अप्रोच्ड अ वेरी फेमस आरजे फॉर दिस। तो इनिशियली जब पैसे की बात हुई तो एक्साइटेड थे, लेकिन जब स्क्रिप्ट देखी तो वो भी पीछे हट गए। तो देन आई थॉट कि अच्छा, फिर लोगों ने बोला कि पहली चीज, यू शुड नॉट डू इट। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे यंग बच्चों को बोल रहा हूँ तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं उनकी लाइफ स्टेक पे लगा सकता हूँ, अपनी नहीं लगा सकता। हालांकि मेरा पर्पस एग्जैक्टली डिफरेंट था उससे। तो दे सेड के व्हाट यू शुड डू इज अपना फेस बिना दिखाए आओ, केवल आवाज के साथ आ जाओ। अब उससे कभी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, पॉइंट नंबर वन। और सेकंड है कि इस्लाम ने जो डर क्रिएट किया है, वो डर उनका सबसे बड़ा वेपन है, जो मुझे लगा था मैंने इसे तोड़ना है। तो आई सेड कि मैं जो इस्लाम के फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल अपफ्रंट रखूंगा, और वट एवर इट टेक्स आई विल गो एंड डू इट। तब फिर वो जो राहुल जी वाला जो इनिशियली हमारी बात हुई थी कि हमने इस पे रिसर्च करनी है, तो उस पे मैं धीमा हो गया। तो आई टॉक टू राहुल जी की बात हुई कि थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आई सेड हाँ चल तो रहा है स्लो। तो व्हाट आई वुड, तो मैंने कहा कि आप फिर वो मैं फंड्स आई डिक्लाइंड कि मैं नहीं लूंगा, या आई सेड समथिंग लाइक कि कोई और जो ज्यादा डिजर्व करता है यू गिव इट टू देम। तो राहुल जी सेड नो, नथिंग डूइंग। तो वो मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। बट जो फंड थे राहुल जी केप्ट ऑन कंटिन्यूड विद इट, और वो टिल डेट कंटिन्यू करता है। और उसने मुझे एक, वो जिसे बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन होता है कि आपकी कम से कम किचन इज सिक्योर। ये मैं आपसे पहली बार मैं किसी के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ, शायद मैंने अपनी फैमिली में भी किसी के साथ नहीं शेयर की। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि आज जब लोग मुझे देखते हैं, मुझसे इंस्पायर होते हैं, आई मीट आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। एक एग्जांपल देता हूँ। रिटायर्ड डीजीपी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट के मिले, और उन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम तुझसे सीखने को मिला। नाउ दिस वाज सच अ हार्ट ब्रेकिंग स्टेटमेंट कि इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट के डीजीपी को, जिसे इस्लाम की ए टू जी पता होनी चाहिए थी, उसे रिटायरमेंट के बाद इस्लाम समझ में आ रहा है। लेकिन एनीवे, तो ये जो आई कुड मेक दिस इम्पैक्ट, उसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो इस फंड को जाता है। वो दिस अनइज्यूमिंग मैन जो आज से 7 साल पहले मिला था, इट गोज टू हिम अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ दैट। ये सब मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आज व्हेन राहुल जी वो सेइंग कि उन्हें इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदू मेंटालिटी ऐसी है। आप हिंदू के पास जाएंगे, मंदिर बनाना है पैसे दे देगा, हॉस्पिटल बनाना है पैसे दे देगा, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है पैसे दे देंगे, गौशाला बनानी है पैसे दे देंगे। लेकिन आप जब इन सिविलाइजेशनल मैटर्स की बात करोगे कि यार हमने कोर्ट में केस डालना है, वकील के पैसे देने हैं, हमने नैरेटिव के लिए अपने वॉरियर खड़े करने हैं, तो उनके चेहरे पे ऐसी लुक होती है कि जैसे उन्हें ये कोई मंगल ग्रह से हुआ आदमी है जो ऐसी बातें कर रहा है। क्योंकि वी हैव नॉट अंडरस्टूड द ग्रेविटी एज वेल एज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। या कुछ लोग अगर समझते हैं तो इतने डर जाते हैं कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस ओवर हियर इज कि वी आर टॉकिंग ऑफ दिस हिंदू फंड, जिसमें मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूं, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं whom ही हैज बीन फंडिंग, और अगेन विदाउट क्वेश्चनिंग, और उनका इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देता है। सो अगर किसी को डाउट हो रहा है कि आप, क्योंकि ऐसा हमने समाज ऐसा देखा है जहां पर एनजीओ बनाई जाती है वो पैसे लूटने के लिए बनाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन किसी के माइंड में भी आता है, यार ये आया तो है, तो इज ही डूइंग सम कॉन जॉब, और वो क्या कर रहा है। तो वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्सन हु हैज इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स। तो इन जैसे व्यक्ति से आपको क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। योर शुड योर अप्रोच शुड बी कि हाउ मच शुड आई पे।
दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है कि व्हाट अबाउट द डिटेल्स के कहाँ जाएंगे, उसका कुछ ट्रैकिंग मैकेनिज्म है? तो आई थिंक ही ऑलरेडी हैज क्रिएटेड दैट। तो ये जो क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन हिंदुओं के माइंड में ज्यादा आता है, वो मुझे लगता है दिस इज नॉट द टाइम फॉर दीज डिस्कशंस। वी आर टॉकिंग ऑफ अ फंड जहां पर यू कैन बी एश्योर्ड विद योर आईज क्लोज्ड कि यहाँ पर उसका कोई मिसयूज नहीं होगा। और मैं अगर आपको, राहुल जी ने कई एग्जांपल्स दिए, इंक्विजिशन से ही मैं शेयर करता हूँ। ऐसा ऐसा फैक्ट है जो मैक्सिमम लोग नहीं जानते, लेकिन उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो एक ही बुक है पूरे देश में, द गोवा इंक्विजिशन, रिटन बाय अनंत प्रयोलकर। उसे अगर आप पहला पेज पढ़ेंगे तो ही इज गिविंग क्रेडिट टू अ ट्रस्ट जिसने उन्हें फंड किया था उस रिसर्च के लिए। रिसर्च इज वेरी 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 एक्सपेंसिव थिंग, और अगर उस आदमी को उस समय वो फंडिंग नहीं मिली होती तो आज हम इंक्विजिशन की बात ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोगों ने बोलना था ये तो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। आज अगर आपको दिल्ली दंगे जो अभी 5 साल पहले हुए थे 2020 में, उनके बारे में जानना है तो गूगल पे जाके टाइप कीजिए 2020 राइट्स। तो आपको पहले पेज पे, गूगल के पहले पेज पे जो 10 ऑप्शंस मिलेंगी वो सारी बताएंगी कि वो एंटी मुस्लिम राइट्स थे। मैं इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट क्यों कर रहा हूं कि फंड की और रिसर्च की ये सिग्निफिकेंस हमें समझनी पड़ेगी कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है नैरेटिव के अंदर कि नैरेटिव के अंदर, इसीलिए उनके पास इतने सारे पोर्टल्स हैं जो निरंतर इस तरह का मटेरियल चर्न करते रहते हैं, जिसे गूगल पार्स करके आपको पहले पेज पे दिखाता है। अगर आपने आज एक 20 साल के 25 साल के बच्चे को बताना हो कि जो ये जो रॉयट्स हुए थे वो एंटी हिंदू रॉयट्स थे, वो क्या करेगा? वो गूगल पे जाएगा, पहले पेज पे हिट करेगा और देखेगा यार ये तो एंटी मुस्लिम रॉयट्स थे। तो आपका नैरेटिव वहीं पे गिर गया। यू यू हैव लॉस्ट वन पोटेंशियल वॉरियर टू द ऑपोजिट कैंप। सेम इज विद लव जिहाद। लव जिहाद टाइप कीजिए, क्या आएगा पहले पहले 10 पे, उस पे सर्चेस पे, दिस इज अ राइट विंग हिंदू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जो रोज आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, इंक्विजिशन तो आज से 200 साल पहले बंद हो चुकी है, उसे वो डिनाई कर सकते थे, लेकिन उस एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने अनंत प्रेलकर को फंड किया था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट हमें दे दिया विच इज नाउ अवेलेबल विद अस फॉर पोस्टेरिटी। दिस इज द सिग्निफिकेंस जो हिंदू समाज को, हम सबको समझना पड़ेगा, नहीं तो व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बंगाल फाइल्स है, जिसमें जो दिखाया गया है वो 1% से भी कम है। जो ब्रुटैलिटी, जो एट्रोसिटीज दिखाई हैं, दे आर लेस देन 1%। हॉस्टल की लड़कियों को रेप करके, कपड़े उतार के हॉस्टल की खिड़कियों के बाहर बुचर हुक्स के साथ लटकाया गया था। पुरुषों को स्किन उतार के, उनको जिंदा को स्किन उतार के लटकाया गया था। और वो अपने उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली प्रोग्रेस कर रहे हैं। 2047 उनकी आउटर लिमिट थी। हमने, और उससे पहले अचीव कर सकते थे। 2014 में हमने इंटरवीन किया है, उस इंटरवेंशन ने उनके उस टाइम टेबल को डिले किया है। कितना किया है वी डोंट नो, लेकिन लेट अस वंस अगेन कम बैक टू चाणक्य। राहुल जी ने अभी बात की कि एक सिविल वॉर इम्पेंडिंग है, और जितने लोग थोड़ा सा भी इसके बारे में अवेयर हैं, जो सोचते हैं, उन्हें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि सिविल वॉर होगी, देयर विल बी ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है? चाणक्य ने जो बोला था, बेस्ट वॉर इज वन विदाउट शेडिंग ब्लड, इफ वी कैन गेट अवर एक्ट टुगेदर। और बहुत बड़ी विंडो नहीं है, 5 साल, 7 साल, एट द मोस्ट 10 साल। इफ वी कैन गेट अवर एक्ट टुगेदर इन दीज 5 years, मे बी वी पुट अवर हेड्स टुगेदर और हम डिटर्मिन्ड हो जाएं, तो हम ब्लडलेसली इस सिविल वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। ये राहुल जी ने एक बार ऑडेशियस गोल्स की बात की थी, ये मेरा ऑडेशियस गोल है कि हम बिना ब्लड शेड के
इन सब की घर वापसी करा के इस बीमारी को निपटा दें। आइडियल सॉल्यूशन तो ये है। लेकिन इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, तो वी हैव टू बी ऑन टॉप, वी हैव टू कम एज अ विनर्स। अगर वी हैव टू गिव सम हेड्स, कुछ ब्लड गिरता है, तो भी वी शुड कम आउट एज विनर्स। और उसकी जो तैयारी है वो आज शुरू होगी। इनफैक्ट वो बीते कल से शुरू हो जानी चाहिए थी, आज भी हम थोड़े से लेट हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इस फंड के लिए एज जेनरसली एज पॉसिबल आप इसे ऐसे सोच के देखिए। व्हाट आई से टू पीपल इज कि आपने एक मूवी देखने जाना था, उसमें आपके आज की डेट में 1000, 2000, 3000 लगते हैं। उसे उस प्रोग्राम को जंक करके जो पैसे आपने सोचे थे वो किसी अच्छे फंड में डाल दीजिए। बस इतना तो बेयर मिनिमम है जो हम कर सकते हैं। तो दैट इज माई कॉल टू एक्शन फॉर ऑल ऑफ अस के द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय राहुल जी इज, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स के कितना इंपॉर्टेंट है ये। एक एग्जांपल के साथ मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। 2 साल पहले मुझे लुधियाना से फोन आया। एक वहाँ पे एडवोकेट हैं। तो वहां पर एक बच्ची को होली के दिन उनके घर में मुसलमान घुसे लुधियाना में। ट्राई टू इमेजिन दिस। मेरे बचपन के समय, आज से 30 साल पहले, पंजाब में मुस्लिम्स नॉन एग्जिस्टेंट थे और वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट थे। सॉरी। अब सिचुएशन कितनी चेंज हो गई है कि लुधियाना में एक घर में होली वाले दिन मुसलमान घुसते हैं, वहां पर 13 साल की लड़की के साथ वो रेप करके निकल जाते हैं। लड़की के माँ बाप को शाम को जब पता चलता है, क्योंकि वो खेलने गए हुए थे, वो आते हैं, थाने पहुंचते हैं, तो ये 4-5 लोग हैं, सामने 200 लोग पहुंचते हैं। कहा सुनी होती है, बात अभी ठंडी होने की कोशिश होती है, इतने वो लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं, बिहार भाग जाते हैं। और ये जो माँ बाप हैं, ये यहाँ पे पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। तो वहां पर ये जो एडवोकेट थे, उन्होंने वो केस लिया, उनका हेबियस कॉर्पस डाला और पुलिस को भेजा गया। वो लड़की को उठा के लेके आए 4 महीने बाद। वो लड़की तब तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। 13 साल की लड़की, शायद 35 किलो के आसपास वेट होगा उसका, और 5 फुट की हाइट होगी। ट्राई टू इमेजिन क्या किया होगा उसके साथ। और जब ये केस लड़ रहे थे, तो अब वो जो रेपिस्ट हैं, वो भी लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आते हैं, लेकिन इस एडवोकेट के पास उस केस को ड्रॉप करने के लिए 7 लाख की ऑफर जाती है। दिस इज द काइंड ऑफ वॉर, द लेवल ऑफ वॉर वी आर टॉकिंग हियर, द काइंड ऑफ फंड्स वी आर टॉकिंग हियर। I think I'll stop further talking. I'll just give you a Please. little background, by the way. ये fund क्या है? हम सरयू ट्रस्ट से we've been giving grants and all since 2016, 17, 18, somewhere around that. So what we've done is we've attributed all of that to the Hindu Fund. Hindu Fund legally has been formed only last year. It's an ATG organization, 12AA, all of that. कई लोगों ने बोला हिंदू नाम मत दो, सेक्युलर नाम रखो, बिकॉज secular is look at how leftist work, they give names like People for Democratic Rights and will go further. But I wanted this name. I learned this from Swami Vijnananda ki we have to stop being shy of using the word Hindu. Thankfully we were able to get the name, the Hindu Network Foundation, because this is not allowed per it was hard to get it basically. So anyways, we copied all of this, exactly this interface you will find on George Soros's site, Open Societies. So every grant that goes, it's listed here. How much money we get, we've not published it so far. We'll just do it shortly. And it's largely my funds at this point in time, but we'll start publishing whatever money we get from outside, assuming that people are okay with that, and so on and so forth. We have to, we are sort of creating an institution. We have a full grade Zoho CRM, the entire suite. That's how we are trying to manage everything. Neeraj heads this initiative. Neeraj is employed with Saryu Trust, and he literally spends 60-70% of his time on Hindu Fund, which is a separate organization. So actually Hindu Fund has no cost except some 15,000 rupees right now for social media.
which we are trying to increase. So I used to run a software business. I ran it for राहुल 20. जी, राहुल जी, नीरज डांगवाल बोल दीजिए लोगों को। Sorry, Neeraj Dangwal, not Neeraj Atri. Sorry, Neeraj Dangwal runs the CRM and all. So anyway, so everything is listed here. You can actually go to each one of these organizations and find out if they received this money. So it's sort of transparent, and that's how you can actually choose where money goes. You can actually choose the organization which you want to give the money to. We have campaigns here, and so you can look at some of these campaigns and say, okay, I want to donate to so and so campaigns. If you go to donate it, pick up which campaign you're giving for, the money and how much. The money will come to the pool, but we will know that you are giving this for so and so campaign. And so we will then route the money. Every quarter we release the funds, and it goes to that particular organization. 2.5% gets cut by Razorpay, and so far we've not cut anything that we have received, but hopefully we want to start keeping something for the corpus and add some 5, 7, 10% to the corpus also from what is received. So let's see, but this is how we run the organization at this point. नमस्ते नीरज अत्री जी सर को भी नमस्ते सर। मेरा एक रिक्वेस्ट है और एक क्वेश्चन है। सर रिक्वेस्ट पहले कि मैंने इस महीने से आपको रिकरिंग डोनेशन टाइप से मैंने एक शेड्यूल कर दिया जो कि 2028 तक हर महीने ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से कटते जाएगी। तो एक्चुअली मुझे लगा था कि मतलब इट्स नॉट माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बट मैंने सोचा था कि ये शायद एटीजी में भी मैं यूज कर लूंगा। वैसे तो मैं चाहता नहीं हूँ, बट अगर कर रहा हूँ तो मिल भी जाता। तो ये तो एक रिक्वेस्ट था कि एटीजी डोनेशन रिसिप्ट मिले तो और ज्यादा अच्छा लगता। तो ओके सर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। एट द ईयर एंड हम आपको फॉर्म 10BD शेयर करेंगे फॉर ऑल योर डोनेशंस। रेकरिंग डोनेशन का हम रिसिप्ट प्रोसेस सेट कर रहे हैं, वो आपको अगले मतलब 1-2 वीक से आना शुरू हो जाएगा सर। बिल्कुल आ थैंक यू जाएगा। सर। वो एक Sorry, सालाना भी बहुत अच्छा रहेगा, एक वो भी चीज मैं चलेगा। क्लैरिफाई कर दूं, सॉरी, जी अगर आप नीरज जी को डायरेक्टली दे रहे हैं तो नीरज जी को देना पड़ेगा। अगर हिंदू फंड के थ्रू रूट करेंगे तो हिंदू फंड से मिल पाएगा, वो आपको देना नीरज है, जी कोई को फर्क मैं नहीं पड़ता। मैं हर महीने 1 तारीख को यूपीआई कर देता हूँ। ऐसे मैंने 5-6 यूट्यूब चैनल के यूपीआई में भेजता हूँ हर बहुत, महीने की 1 तारीख को। और रोकिएगा मत, जिसको भी भेज रहे हैं प्लीज रोकिएगा मत, स्पेशली से नीरज जी के और एक्स मुस्लिम चैनल्स जो हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सबके बिल्कुल रोकने नहीं है। 3 साल रोक सोचना नहीं है, सैलरी हर साल बढ़ती है, वो थोड़ा सा ऐड कर देना है या कोई और लेना है। तो जी सर, मैंने एक्चुअली ये नियम बनाया कि मैं अपनी सैलरी का 5% इन चीजों में दिया करूंगा, तो मैं ये करता हूँ। मेरी दूसरी डाउट ये थी सर कि मैं अपने दोस्तों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि वो लोग भी आपके ट्रस्ट को हेल्प करें या एटलीस्ट सोचे हिंदू कॉज के बारे में, एटलीस्ट शत्रुबोध हो। बट वो इतने उल्लू के पट्टे हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि भाई तुम्हारी जरूरत की बात बता रहे हैं। वो बोलेंगे मैं धर्मांश फाउंडेशन को क्यों दूं, वो पैसा लेकर के भाग गया तो संगम सरयू ट्रस्ट को क्यों दूं, वो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और मैं समझाने में चूक जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता इनको कैसे समझाऊं मैं। पहली बात है कि वो ऐसे धर्मांश के लिए उमेंद्र रत्नू को मिल लें, उनका कोई जो कॉन्वर्सेशन होती है वहाँ आके मिल लें, बाकी इस वेबिनार में बुला लीजिए। तो जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पर सीधे के सीधे एड्रेस कर देते हैं। नहीं, उसमें एक और ऑप्शन होती है राहुल जी, जी, कि उन्हें बोलो कि जिस तरह से साहिल या नीरज अत्री जो बात करते हैं, आप अपने आप से वो बात करनी शुरू कर दो। Namaskar, both Rahul and Neeraj ji. Neeraj ji, I missed meeting you in Goa, but I am face to face. I am meeting you here. Quickly, I have got you started your talk. We have not got our act together. I don't know who. I think you made the statement. Rahul made the statement. No. So, आई with में reference to that, what I want to say is that today RSS, it's celebrating 100 years. Today, I can show you here. There's a big article in the Kannada newspaper written by Ram Madhav, and they're saying without Muslims it is no Hindutva. Just listen to the statement. Without Muslim, there is no Hindutva. This is what Bhagavad Ji says, and that is what Ram Madhav writes. So under these circumstances, my submission or my question is
don't you think there is a, because RSS is a very huge organization, Sanatan is also a huge organization. In comparison to them, you are beginners. I would say you're active, but so internal dialogue. You know, don't you think an internal dialogue is behind the doors is required? For example, now Sanjay Dixit is organizing a meet very shortly. You have so this diversified or different people having different. You should have that one platform, and then only we can get our act together and the fight the enemy. Otherwise, enemy is very strong. Neeraj ji gave a small example of one girl getting kidnapped and how they are Immediately, running. I'll So try and under answer. Yeah. this is my concern. And then finally, one more point is: have you heard of Deval Smriti, which talked about Ghar Wapsi in the 10th century? This is a Dharma dispatch. It is available. Sanjay, what is his name? Sandeep Balakrishna. So that may be of some help. You can look into it in due course. So this is the concern I thought I would share with you. Ramesh sir, I mean, just on one platform, everybody coming on the same platform is just impossible. I mean, George Soros has 100 organizations under him, each to do a specific task. It's not impossible. Everybody has a different objective to, and collapse everything and make one platform. That probably things like that don't work. Maybe I didn't get your question properly. That whatever I gathered, I'm responding to that. We have got All India Bishops Conference. We have got All India Ulema Council. So similarly, there has to be one platform fight for Hindus. On big occasions, come together. Everyone says we want to bring Hindus together, but they're not together. These big organizations, they have to be brought together. Maybe, sir. I mean, we all go in each other's platforms, and so I guess we do get together. I'm not sure what objective we'll get to achieve if we all come like in all ulemas, platform or bishops. There is a dharma. Parallel to that are multiple organizations called the Dharmacharya Sabha, and they do get together. What they do there, what they achieve is a different matter. But all right-wing YouTube platforms don't get together in America or in India, nowhere. I mean, they meet each other, they collaborate, which we all do. But I think just coming together, I don't know for what objective. So I have a problem with this idea of Hindu unity. I think we are fairly united. We don't have a disunity problem, and we do collaborate. So yeah, I'm not sure what we want to solve by coming together on one platform, because we have different objectives and we pursue those. Do we collaborate? Yes. The Hindu Fund is actually an exercise in creating a network fund so that we are able to fund 1,000 organizations. So I mean, we do. I don't think there is a unity problem here. Also, just like companies, there are different people who have different styles of running their institutions, and everybody can't come together and work achieve the same objectives. Sir, Neeraj sir spoke about one faction, which is the anti-national faction, which is the radical Islamist. But there is an equally other dangerous faction, which is the communist and the leftist. And they have, as of this day, they have occupied a large portion of our, the educational institutes and other media institutes. And they and as per Rajiv Malhotra sir's latest book, The Snakes in the Ganga, even our Indian billionaires are contributing now to these anti-national neoliberal organizations. So how do we, combat this front? And they provide back support to these Islamists and other breaking India, anti-India forces. Yeah, I don't know the answer. Maybe Neeraj ji can come in. I just have a very quick answer. My recommendation to all the rich Americans, Hindu Americans, has been that please write large multi-million-dollar checks for Hindu studies in universities in America. I mean, I believe we have 3 Hindu studies universities in US. The Chinese probably have 100. So they need to get their act together and fund these. We should be funding reincarnation studies in US and in Germany and France and everywhere. We don't do all of that. So I don't know. I mean, there's no easy answer to this except doing strategic thinking and work. There is $6 billion of temple property in US, but they don't fund 3 chairs, beyond 3 chairs in the US for Hindu studies. So I'll go to the next question.
unless Neeraj ji, you want to say something, just barge in, please. नहीं वो बस इतना ही था कि we today's discussion was primarily based on the funding part. The challenges are multi-pronged. Problem is with missionary activity also, but that is not what we were focusing today. जी. Correct. And you know, there are legal route to this. For example, this funding thing that Neeraj ji has brought, we have to be able to go after this, our own government, sadly, to at least publish data of how much money has come into the country. They stopped it in 21. Nobody is fighting this case. Now with Vishnuji, we've listed this as one of the cases we want to fight. You know, how many things will he do? But he will, poor man will still do. We got to ensure that he's well funded. That is what I'm after right now. Yeah, namaskar. I'm Namaskar. a very late entrant to this. I'm a retired person from central government. I discovered all of these issues being discussed while in service towards the end of my service. So sometimes I feel I wish I had woken up like many of you here earlier and had contributed, participated. So now my duty is to go watch Neeraj Atri's movie, Bengal Files, Udaipur Files, tell my friends, read Rajiv Malhotra's books, try to understand Dharma in a better manner. I'm a South Indian, by the way, who's supposedly to be knowing many things, but unfortunately, we are the second generation who came to Delhi totally disconnected from South India. So my children are totally secular, very difficult to talk to them. Now I find it very difficult to talk to them because they all find me propagandist. So I'm learning the new language. I'm learning material so that I can discuss with them with a lot of, actual facts and incidents. So it's quite a serious learning and reading time for me. So the one point I wanted to say was Mr. Ratnu's website I went to, and I couldn't contribute there. In your website, if I give, is his project listed here? No, his project is not listed because he's like a Hindu fund. So we have a Dharmaj fund and a Okay, Hindu fund. So okay. he's raising his. No, I'd like to do there Hinduism. also and yours also. Sure, I sure. did contribute a small amount, but I want to make it monthly. Thank you. So we have a subscription model which you can use. I'll do that. And I must say, you're all doing a great job. I'm so happy that finally I got connected to something really what matters which is close to my heart. So I'm really glad that we have sort of, at least so many of you have been doing such a great job. Because I've been reading Saidi books also. And we're happy to address some of these things about kids who sort of call us propagandist and all of this. So if there is a way to get them in a room, we can address some of these things. I know, but what to do with educated older adults in my home? Okay. One is in America, one is in Delhi. My daughter here is a corporate lawyer. Thankfully, at least I could bring her away from woke crowd. That's one thing she understood. Okay. So now I'm slowly working on myself so that I'm able to speak better because, well, debate was never a strong point while growing up, in India. So I'm trying to hone my skills and trying to influence people around me. But tragedy is my own group doesn't seem to see that. And I don't know why. Yeah, sometimes what helps is, ma'am, if you organize small groups and, wherever you are in India, I'm happy to travel and make presentations. And so we can actually have. Now that I know that I'm connected with you people, I will seriously work on it. So there is, just to give you a, anecdotal example, there is this, some Kashmiri, topper who's in Delhi NIT and all of that. And we ran into each other on LinkedIn. And I actually invited him to do a podcast, or an online conversation. And he's going to be inviting a couple of people. And I'm hopefully going to have Neeraj Atri with me. And we're going to be able to have a dialogue of religions, if you like, something I've been wanting to do for a long time. And hopefully pull this off. Absolutely. So it'll be a public thing if we do this. So I'm also putting myself up at a little bit of a risk. But anyways, thank you. नमस्कार पहले तो सभी को राहुल जी नीरज जी
It was nice meeting in स्वराज्य कॉन्क्लेव एज वेल। मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम भक्स.com, हम लोग थ्रेड बनाते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। माय मेन पॉइंट वाज कि मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था राहुल जी, और उस दिन स्वराज्य कॉन्क्लेव में भी देखा कोई क्यूआर कोड नहीं है कि लाइक आई मीन जस्ट शो एवरीवेयर कि दिस इज द क्यूआर कोड, स्कैन करो, 100 रुपये 50 रुपये जितना भी है, जस्ट डोनेट इमिडिएटली। तो आई थिंक दैट शुड ठीक है, कम अप। डाल देते हैं नीरज, वो डाल देते हैं वो वन टाइम सर के लिए। हाँ, वहां पे लिंक है सर। एक्चुअल में हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि एनोनिमस कितनी डोनेशन ले सकते हैं और विद डिटेल कितनी ले प्रॉब्लम ये सकते रहती हैं, है बट कि एनोनिमस कितनी लें, बिकॉज वो सारे सीएस फिर हमारे को परेशान करते हैं कि कहाँ से डोनेशन एटीजी बट कैसे। हम डाल देंगे क्यूआर कोड, नो इशू हाँ, सर। बट मुझे लगता है कि क्यूआर कोड ज्यादा इजी होता है कि नहीं हर नहीं, किसी डाउट को नहीं है, यूपीआई मगर करने की आदत होती है। 2000 5000 कोई एक उस पर लिमिट लगानी पड़ेगी, नहीं तो एनोनिमस डोनेशन बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हाँ ठीक है, कर देंगे सर, कर देंगे, कोई इशू जी। नहीं। और दूसरा ये कि गोवा इंक्विजिशन का नीरज जी बोल रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि डेफिनेटली मेनी पीपल डोंट नो अबाउट गोवा इंक्विजिशन, लेकिन मैंने बहुत पहले पढ़ा था। नेट पे थोड़ा बहुत कंटेंट अवेलेबल है, एंड आई वाज इम्प्रेस कि मैंने अपने, आई एम ऑल्सो अ राइटर, तो मैंने अपनी बुक में जो है आई हैव इंक्लूडेड स्पेसिफिकली कि ऐसे इवेंट जो है कहीं ना कहीं मेंशन होने चाहिए इन एनी वे। तो मैंने उसके लिए एक पैराग्राफ अपनी बुक में दिया है कि स्पेशली ऑन गोवा इंक्विजिशन की सारस्वत ब्राह्मण के साथ हुआ क्या था एक्चुअल में, वो जो कोंकणीज थे वो कहाँ चले गए। जस्ट वांटेड टू रीआइटरेट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नीरज जी से पहली बार इस तरह से मुलाकात हो रही है, मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। नीरज जी, मुझे बाहर ट्रैवल करने का मौका मिला है, तो मैं बाहर यूरोप यूरोप गया हूँ, और मैंने देखा है कि किस तरह से वहाँ उत्पात मच रहा है। जो चीज़ हम यहाँ फेस कर रहे हैं वो चीज़ वो लोग भी वहाँ फेस कर रहे हैं। मैं एक अकेले गली में था, और मेरा मैनेजर था वो मोरक्कन मुस्लिम था। तो हम इजीली प्रोफाइल हो जाते हैं। तो हमारे सामने लड़कियां जा रही थी, तो जब तक वो गली से गायब नहीं हो गई तब तक वो मुड़ मुड़ के देख रही थी। तो मुझे ये समझ में आया कि किस तरह से लोग भयभीत हो रखे हैं वहाँ। और चेन स्नैचिंग, वॉचेस आप पहन नहीं सकते, ज्वेलरी आप पहन नहीं सकते। मैं तो इंडिया में बहुत आराम से पहन सकता हूँ, वहाँ तो हालात ही बुरे हैं। लंदन की जिस तरह से हम खबरें सुनते हैं, स्वीडन की जिस तरह से हम खबरें सुनते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, इन्होंने अपना गेटोस बना रखा है। जिस तरह से इंडिया में होता है, इन लोगों ने सारे जो माइनॉरिटी के नाम पे हर चीज हड़प लेना, उस तरीके से 5 5 10 10 बच्चे करके ये सब ग्रांट्स हड़प रहे हैं, सरकार से सुविधाएं हड़प रहे हैं। मैं आपकी ओपिनियन समझना चाहता हूँ इस बारे में कि ये जो यूरोप में हो रहा है, और अब लोग यूरोप में रेजिस्ट करने लगे हैं, बहुत सारे राइट विंग्स वहां पे उठने लगे हैं। मेलोनी फॉर एग्जाम्पल इटली में, और पोलैंड, वो तो बहुत ही वोकल है। और बहुत सारे और भी कंट्रीज है जहाँ पे अब राइट विंग काफी तेजी से पनप रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ स्ट्रगल हो रहा है वहां भी स्ट्रगल होगा, और हो सकता है यूरोप हमारे साथ एक तरीके से बॉन्ड फील करे, या फिर वो समझे कि हमारा पेन कॉज अब एक ही हो गया है और हम यूनिफाई हो जाए इस कॉज के खिलाफ? अभी ऐसा तो कुछ नहीं लगता जी, और यूरोप की सिचुएशन हमसे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और माई असेसमेंट इज के अब मेजर पोर्शन ऑफ यूरोप इज अ गॉन केस नाउ। दे आर बियॉन्ड द टिपिंग पॉइंट। और उसका मेन रीजन उनकी पॉलिटिकल करेक्टनेस है, जिसे उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया है। हम अभी उतना इंटरनलाइज नहीं कर पाए सेकुलरिज्म को। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इधर कईयों ने बोला कि वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते डोनेट करने के लिए, और वाकई भी बात फैक्ट है, मैंने भी बहुत ट्राई की है। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक वो इसको समझेंगे नहीं कि प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, तब तक वो कन्विंस नहीं हो पाएंगे कि डोनेट करना है। तो जो मैंने अपने से एक्सपीरियंस किया है कि हर एक के पास होते हैं ग्रुप्स, फैमिली ग्रुप्स, स्कूल के ग्रुप्स, कॉलेज के ग्रुप्स। तो उन सब पे जो है ना, पहले तुम्हें हल्का हल्का वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब के दूसरे, पहले लोगों को अवेयरनेस आएगी, फिर ये जो है जो कंट्रीब्यूशन करने की सिचुएशन तक पहुंचेंगे। अभी तक जो हमारे में जो वो भी इतना ज्यादा लेवल है ना, वोक लेवल, कि वो अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे, एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रहे कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है।
तो मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो HSS है या RSS है, जितने भी, मैं खुद भी यहाँ पे जाता हूँ रेगुलर, तो उधर क्या है, माहौल थोड़ा दूसरा है। तो उसमें क्या होता है, उन ग्रुप्स में तुम ये नहीं डाल सकते, लेकिन तुम पर्सनली हर आदमी को ऐसा 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 उधर तक पहुंचा सकते हो कि जिस लेवल पे हो कि तुम खुद, ये है जगह, यू ट्राई टू कंट्रीब्यूट योरसेल्फ। नहीं कर सकते, लेकिन क्या है उनमें, क्या है थोड़ा थोड़ा मैं जो देखा है, क्योंकि मैं खुद 2 साल पहले तक, मैं बताता हूँ, 2 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम केरला फाइल्स देखी थी। तब तक मैं एक हिंदू पेट्रियाटिक इंडियन था, लेकिन मेरे को ये भी नहीं पता था कोई एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का। तो मैंने फर्स्ट टाइम केरला फाइल्स देखी। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया खुद ही, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। मैंने खूब डीपली स्टडी करनी शुरू की, फिर जे स्मिथ वगैरह के देखे वीडियोस, और उसके बाद मैं खुद इतनी स्टडी करने के बाद मैंने अपने आप हजारों लोगों को ये मैसेज पहुंचाया है, और मेरे हिसाब से ये पॉसिबल है। जो HSS में जो लोग हैं, जो RSS में हैं, जो जाते हैं बौद्धिक में और दूसरी जगह भी, क्योंकि उधर एक टॉपिक्स होते हैं बौद्धिक के, तो बौद्धिक के टॉपिक्स के छोटे छोटे जो है ना, 10 मिनट का होता है सिर्फ बौद्धिक का टॉपिक। तो उसमें डिफरेंट मतलब क्या है कि हमें ना ज्यादा बड़ा नहीं देना है, हमें बहुत छोटे से इंजेक्शन देने हैं। मतलब ये अगर आप ज्यादा देते हो ना, भाग जाता है आदमी एकदम। क्या बहुत हल्के से ना उसको देनी है, मतलब उसको क्या है, एक जर्नी है, उसको लेके हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के यहाँ तक लाने के लिए ना, कंट्रीब्यूशन के लिए पहले उसको तैयार करना पड़ेगा। वो ऐसे सीधा नहीं आ जाएगा। तो वो जो है ना प्रोसेस, वो प्लीज सब इस बात पे मैं कहता हूँ कि ध्यान दें, कि लोगों को यहाँ तक लेके आए कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें। थोड़ा थोड़ा धन्यवाद। एफर्ट शुरू करेंगे तो अपने आप सीख जाते हैं कैसे करना है। नीरज, डू यू वांट टू क्विकली टेल एवरीबडी हु इज हियर ऑन हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, द ATG receipts on via Zoho CRM, please? Yes. So everybody who contributes now will receive an automatic ATG receipt, and they will be able to access it. At the end of the year, we will issue a Form 10BD. Okay, we have already set up a system for it. The only condition is whosoever wants to make the anonymous donation, they can't avail the ATG because they want to pay through the QR code. Whosoever pays, gives us the details about their name, PAN number, address, and email ID and phone number will be able to avail the ATG receipts, and it will automatically come to you. You don't need to expect a separate email from our end. As soon as you make a donation, you will receive an ATG in your inbox Yeah, at the moment itself. we are a lean organization, so we've like I said, we are using the Zoho CRM suite, and so we wanted to set up auto things so that we have to minimize the overhead on doing all this work. ATG receipts. जो विषय था, बहुत सारे वॉलेंटियर्स चाहिए और बहुत सारे जो है फंड का जनरेशन चाहिए। तो आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी इसको थोड़ा सा स्मार्ट और स्मूथ कर सकते हैं। और एक ह्यूमन टेंडेंसी जो बैकग्राउंड में होती है, वो रिकॉग्निशन है, महान बनने की इच्छा है। तो हमको कुछ ऐसे टूल्स का प्रयोग करना चाहिए, एंड इफ रिक्वायर्ड इसको इन डेप्थ डिस्कस कर सकता हूँ मैं, कुछ समझाने की कोशिश भी कर सकता हूँ मैं। कहीं अगर भारत में आप लोगों के पास ट्रैवल करके आना है, जब आप की लोग जो इसको टेक केयर करते हैं, तो मैं अपने खर्चे पे आ जा भी सकता हूँ। तो बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि अभी हर हम वेबिनार के बाद का हमारा फंड जनरेशन का डेटा कैसे बोलता है। जब भी हम सेल्स मार्केटिंग की बात करते हैं, तो एवरी एक्टिविटी गिव्स अस सम रिटर्न्स, तो तो सर, उनको मेजरेबल कैसे करते हैं। हाँ जी, तो अभी ऐसा चेक नहीं कराए। गुड क्वेश्चन कि हर वेबिनार के पास अभी किसी ने हमसे पूछा। विल स्टार्ट ट्रैकिंग दिस। हाउएवर हो क्या रहा है कि थोड़ा मोमेंटम बन रहा है, सो वी आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ अदर पॉडकास्ट एंड ऑल। सो कुछ लार्ज डोनर्स अप्रोच कर रहे हैं धीरे धीरे, एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स वेयर, फॉर एग्जांपल अभी किसी ने बैंगलोर और बेलगाम में 15-20 रिच बिजनेसमैन की गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। So I'll be traveling to Bangalore and Belgaum making presentations. So there is momentum, धीरे धीरे बढ़ रहा है। That's also. आपको कुछ भी लगे किसी भी पॉइंट पे, तो जी, जो मेरे आइडिएशन है वो वॉल्यूम्स क्रिएट करने के हैं, और ठीक है, कुछ आइडिएशन हाउ यू कैन ऐड ऑन वॉलेंटियर, क्योंकि आपको वॉलेंटियर्स का बैकग्राउंड चेक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। नीरज, if you can connect with Andy Gupta ji, then Yeah. maybe they can be some. I'll Thank you, sir. नमस्ते, थैंक यू सो मच राहुल जी। मैंने अभी एक्चुअली लास्ट 1 month बैक
I have seen about your good work. So this is really wonderful. I don't know, I was not getting an option to raise my hand there in Zoom. A couple of points I have, like someone was telling that it's very difficult to convince the people what the threats we are talking. So just for that, they can note down. Am I audible, right? Yes. Yeah, they can note down couple of quotes or the ayat from the Quran. Okay, and it is very clearly telling that what they have to do with the non-Muslims. So whenever we are struggling, I'm already using this. It's very clear that what the what is written there in the Quran for some, especially with some in some of the ayats, that what we need to do. So you can quote those things, and all the Muslims are following the Quran or the Islam. So that is the very foundation pillar for any Muslim. And other point, what I was telling Rahul ji, that not sure that if you can also meet with Mohan Bhagwat ji and other people from BJP and let them know that what are the work you are doing. So they have since very big influence. They can help you to connect with the people. Like if you see some of the good gurus, like we have in Chhattisgarh, we have this. Sir, just to interrupt you, firstly, we're not going to the Sangh. We can go to RSS volunteers who work for RSS Mhm. to fundraise, but I'm not going to go to Mohan Bhagwat ji or BJP or anybody to raise money. Okay, and This is okay, and society's problem, and we have to solve it via all of us. Fundraising efforts, one of the biggest objection I face from large rich donors is that ये तो RSS का काम है, तुम लोग क्यों कर रहे हो? right, RSS is not doing what you are doing, of course. But other point, like also Rahul ji, we can also, you can get the fund from the governments, right? Either central government or from the state governments, ट्राई कर right? रहे हैं हम CSR मनी, बट बहुत डिफिकल्ट है ये, है ना? बहुत साल से हम लगे पड़े हैं, 2 साल हो गए नीरज को, वो ज्वाइन ही करा था CSR फंड्स रेज करने के लिए, हम कुछ भी रेज नहीं कर पाए हैं छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से. इट्स अ वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम टू रेज मनी फॉर कल्चर. और जैसे ही वो हिंदू फंड आ जाता है, और अभी हमारी स्वराज्य कॉन्क्लेव में एक वेरी लार्ज, मैं नाम नहीं लूँगा, वेरी वेरी लार्ज, जिसको मोदी जी रिकग्नाइज कर रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने 3 लाख रुपए स्पॉन्सर करने से मना कर दिया. क्यों जी? कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी डाइवर्स एंड वी कांट बी एसोसिएटेड विद राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस. Yeah, तो I ये है understand that. हमारे आप. हाँ, तो ये रोज जूझना पड़ता है हमारे को ये सब That बातें. is the rhetoric and the mindset it has been created. So, but anyway, what you are doing, that will be really help to change the mindset. Okay. And also from the government is also funding some of the projects what you are doing, right? Legally they can also Government fund. does not fund anything. एक गुरुकुल में गौशाला बना दें तो उसके लिए बिहार गवर्नमेंट और जैसे कोई और गवर्नमेंट्स सब्सिडी देती हैं. वो सब्सिडी लेने के लिए 50% तो घूस खिलानी पड़ेगी और 3 साल लग जाएंगे. तो वो जूझना हमारे को नहीं है सर. हम हिंदू समाज से डोनेशंस ले रहे हैं. मुझे गवर्नमेंट संग नहीं जाना बीजेपी के पास. ठीक है सर, प्लीज. थैंक यू. I've been silently following up all your thing. I read Arvind Neelakandan's Breaking India in Tamil and English also, both. And I am happy to say that I am a very close associate and friend of him, following up for almost a decade now. We are restoring world temples without involving the HRNC in Tamil Nadu. What we do, we strategically say it as a donation-based temple, and we don't make any receipt for all the donation. Everything in kind and labor, means the donor will directly pay to the labor, donor will directly buy the raw material. Like that we are doing, and doing conventional traditional materials with lime mortar and the granite methodology only, with the help of a ex-retired ASI director, who is a very clean person in this record. So we have restored so far 32 temples. Now the challenge is documenting in every district. I have almost traveled 2,000 villages the past 16 years. I document more than some 12,000 temples, which are in ruined condition. Twice my hard disk broke. With my individual capacity, I cannot do this with my NGO as well, because Dr. Satyamurthy is already 80 plus. Now we need to strategically, I am ready to volunteer for the whole operation, but to pay the unemployed history and archaeology students who are graduates and postgraduates who know their geography very well, we need to pay them at least their travel cost and their food and other thing. If something could be planned on these lines, I Sure, can sir. share happily, give me your email ID and other thing. What Sure, we need sir. is not a big amount. If I have 3 crore rupees, complete Tamil Nadu, the list of dilapidated temple along with the geotag and what type of renovation and budget we need, everything can be documented
along with the certification or a notification by an archaeology expert. So this is one thing which I want longing to do, because individually I have done some 2,000 temples. Beyond that, my capacity or time doesn't allow this to do. But I have a group of unemployed archaeology students, history students who are PhD and other thing, but they don't get a job, unfortunately. These people are ready to die for the cause, because they want to save the heritage, not for the sake of Hindu temple or anything, but our heritage has to be saved. So they can do the volunteering in a very accurate manner. So I need your help and support in this, Rahul D. Thank you. Ji Chandrasekharan ji. So if you can send us an email, Yeah. email is listed on the website. If you can send us that with a Yeah. and then let's talk after that, sir. Thank you very much for attending, and please do donate to our causes. I will close with that.